Alright, so hi guys, a very warm welcome everyone joining us here at BYJU'S Exam Prep. Welcome everyone. Good evening, hi. Welcome Satya, Glory, good afternoon guys. Hi Ipshita, Kanak, welcome Asmita, Violet. Welcome guys, welcome. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. चलिए जी, हाय नीरजा, गुड इवनिंग, हाय उत्कर्ष, वेलकम बड़ी वेलकम, स्वागत है गाइज. डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. द एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि भाई सारे मंथ्स का करंट अफेयर्स रिवीजन हम आपको यहाँ पे करवा देंगे यूट्यूब पे ही. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस सीरीज, यू हैवंट फॉलोड इट फॉर एनी रीजन, मेक श्योर यू डू subscribe to our channel immediately and do watch the previous videos as well. We've started from the month of May 2021, so you can imagine how detailed this the entire series has been. All right, so today we'll be covering the month of February, right? So February 2022, lots of things happened. We all know the budget came out and whatnot, right? So lots of international issues are also out in the open. Lots of things happened in the month of February. All of that we'll be covering, and we'll also do lots and lots of questions today in this session. So lots of MCQs coming your way as well. So let's go, let's start. So guys, this is the list of important topics that we'll be discussing today. Economic survey and budget, we'll be talking about that. We'll be talking about Russia-Ukraine crisis. We'll also be talking about interoperable criminal justice system, new India literacy policy, China-Pakistan economic corridor. Now, this is the entire list of all important topics from the month of February. So please take a screenshot here, right? फटाफट से इसका screenshot ले लीजिए. And if you have missed out on any of this important topic, do your research on the same, right? If you haven't attended our classes or our sessions, just do a basic search about these topics, and बाकी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस सेशन में कर लेंगे, राइट? सो ऑल द रिमेनिंग थिंग्स विल बी कवर थ्रू दिस सेशन. चलिए, ऑलराइट, सो दिस इज द लिस्ट. ऑल्सो we will be talking about INS Wagir, Atal Tunnel, Jammu and Kashmir interim report on delimitation. Very important. This is, guys, the third one. Very important. The Million 2022, the Kisan drones, the G20 Secretariat. All these are also important. So take a screenshot of this as well. The list of all the important topics. Right, so let's go, let's begin. Everyone, I think, has joined us. Welcome guys, welcome, स्वागत है आप सबका. Hi everyone, welcome. चलिए जी. All right, yes, ये May 2021 से start हुआ है भाई, और वहां से लेकर हम अभी तक कवर कर रहे हैं. This is the February 2022. All right, let's go. So the first news is basically about a budget. We all know that this was again a paperless budget, right? So now share this with me. How many of you are aware that from which year the budget is introduced in the month of February? But from which year? जल्दी से बताइएगा. Let's see how many of you get this one right. A hint for you: Arun Jaitley, the late Arun Jaitley, the former finance minister of India, he basically was the one who introduced this in the month of February for the very first time. What was the year? Quickly share in the chat and in the comments. All right, meanwhile, till the time you share your answers, जल्दी से देखते हैं इसमें आज इस बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले, दिस वाज द फोर्थ बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन, आवर फाइनेंस मिनिस्टर. Also, this was the second paperless budget as well. So, second paperless budget, right? And the fourth budget of the finance minister Nirmala Sitharaman, right? So second paperless budget and Narendra Modi government's 10th budget overall. India's economic growth forecast was 9.2 as per the budget. Total expenditure was estimated at 39.45 lakh crore rupees, and total receipts other than borrowings. Borrowing matlab udhar, obviously you will not count borrowings as your income, right? So the difference between the overall income and the expenditure, ये देख सकते हो आप, the income was predicted or estimated at 22.84 lakh crore rupees. The expenditure 39.45. The deficit, you can see here, roughly around 16 to 17 lakh crore rupees is the deficit, right? This is basically known as
fiscal deficit, the difference between the income and expenditure, right? As simple as that. Government's projection, you can see here clearly a huge fiscal deficit is there. So how is that fulfilled? Through borrowings and through external other earning sources as well. Now, the proposed, you can see a fiscal deficit of 4.5% of GDP by 2025-2026. We are basically working hard to reduce this fiscal deficit, right? 60 lakh new jobs to be created under the productivity linked incentive scheme. Very important, guys, in 14 sectors, right? So we can ask you about this PLI scheme. Very important. We have discussed in great detail. Now, the PLI scheme basically is an initiative to make sure that the entrepreneurs or any such business that believes or does anything which is related to production. Let's say for if they open a factory or a or a warehouse where they are producing goods or services. So basically, if they are doing that, the government of India will give them lots of benefits, right? They'll give them tax benefits, they'll give them registration benefits and all these things. So 60 lakh new jobs will be created through these incentivized scheme, right? जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. So this was also announced in the budget. Next, meanwhile, let me share, all of you have shared the correct answer for the question that from which year we started the budget announcements in the month of February. Well done, absolutely correct. Kanak, Satya, Devarita, well done guys, good job, good going. Absolutely correct. Chaliye ji. All right, now next, guys, any one of you basically who has answers to queries like the one just asked right now. अभी किसी ने पूछा है कि भाई CLAT Ignite कहाँ से डाउनलोड करें, तो गाइज फटाफट से उनको बता दीजिए कहाँ से डाउनलोड करना है. बेटा जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, राइट? Alright, so PLI schemes have the potential to create an additional production of 30 lakh crores entering Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. The budget provides more impetus to the PM Gati Shakti scheme, productivity enhancement, the sunrise opportunities. Sunrise opportunities क्या होती है? Basically industries or companies or organizations which are at a nascent stage, जो अभी full grown होना बाकी है, right? So that phase. उसके अलावा 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured in the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for helping the logistics to be developed during the next 3 years again. Scheduled commercial banks will set up 75 digital banking units across 75 districts. Please write the numbers. All these numbers 40, 100, 75, all these are super duper important. And lastly, any income from transfer of any virtual direct digital asset to be taxed at the rate of 30% as well, right? So make a note of this as well. All right, done. चलिए सर, आप कब से रिवीजन क्लास ले रहे हैं? बहुत समय हो गया. आप तो पूरा मई हमने रिवीजन क्लासेस चलाई हैं, है ना? तो आप वो सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे. फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा. Alright, the second issue, guys, here we go. China-Pakistan Economic Corridor. So, China's Belt and Road Initiative is going at full swing. China is trying its best to connect all important geographical locations around the globe through either its sea route or the land route or airports, building airports and aerial connections. So basically, to make sure that there are no trade barriers, in the sense wherever China wants to go with their goods, or whenever or wherever they want to sell those goods, they can basically do the same at their own whims and wishes. So that is what is the idea. China is doing this initiative to counter this. European Union has launched their own global gateway initiative, right? So BRI's subset, you can say, a part of the Chinese expansion or the trade routes. They have started the China-Pakistan Economic Corridor, which is basically something that India is been opposing for a long time now. You can see China-Pakistan, basically this road passes through the
the Kashmir region where the dispute actually is. India is claiming that the dispute is about land. The land cannot be used by China because it is not of Pakistan. It is a disputed territory. India claims that it is India's. तो इस वजह से काफी बड़ा dispute चल रहा है इस region पे. What exactly is the CPEC? You can see here. CPEC is a 3,000 kilometer long route of infrastructure projects by China in Pakistan. देख सकते हो आप, which will connect China's northwest, you can see a northwest region and the Gwadar port in the Balochistan region of Pakistan. This is the main idea behind it, right? So this basically CPEC started in the year 2013. Do write this as well. In the year 2013, this started. It is a bilateral project between Pakistan and China, and lots of infrastructural developments China will do there, which include basically building highways, railways, seaports, building pipelines, and all such other development programs. The agreement between Pakistan's Board of Investment and the NDRC is aimed at boosting Chinese investments there in Pakistan. So, as we have discussed, CPEC is a part of the Belt and Road Initiative, and the BRI was again launched in 2013, aims to link Southeast Asia, Central Asia, the Gulf region, Africa, and Europe with a network of land and sea routes. So, that is what is the entire BRI and CPEC. Alright, so now this topic about wetlands. अब ये आप देख सकते हैं wetlands की जब हम बात कर रहे हैं, this was there last year as well, is very important with respect to our exam. Of course, there is no reason why you don't study this thinking कि यार तो पिछले साल पूछ लिया अब नहीं पूछेंगे, right? So it's always best to be prepared. World Wetlands Day is observed every year on the 2nd February globally. The theme is Wetlands Action for People and Nature. ये देख सकते हो आप theme यहाँ पे लिख सकते हैं हम. Now, 2 new Ramsar sites, this is very important, do write this, have been found here. The Khijadia Wildlife Sanctuary in Gujarat, this has been added, and the Bakhira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh. Basics about, the basic static information about Ramsar is also important. Say, for example, you all know that the Iranian city Ramsar in, almost 50 odd years, नहीं 50 से भी ज्यादा हो गया अब तो काफी साल पहले बेसिकली ये जो है थॉट आया था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड ऑल major countries basically collaborated together, and they basically founded in the year 1973-1974. They basically created a list of Ramsar sites, right? Ramsar convention based on protecting, or rather aimed at protecting the wetlands across the globe, right? So that these areas where there is water availability, easy water availability, you can say, they are not you can say मतलब उनको डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खराब ना हो जाए, वो सब जगहों को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. तो ईरान में रामसार में ये कन्वेंशन साइन की गई, इसलिए इसका नाम रामसार कन्वेंशन. 2 new sites have been added here. आप देख सकते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश में. ये important है. How many new Ramsar sites there are? New total is what? How many total Ramsar sites are there in India? जल्दी से मुझे लिख के बताइए. Let's see कितने लोगों ने सही आंसर देते हैं. चलिए. Very good. Glory, Satya, SK, absolutely correct, guys. Well done. ये हुई ना बात. 49 is absolutely the correct answer. Good job. 49 new Ramsar sites. Absolutely correct. Well done. चलिए. Up next, World Sustainable Development Summit 2022. Now, this basically was a virtual summit, and the theme here, as you can see, towards a resilient, this is the theme, guys, towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future. Do write this down. Jaldi se likh dijiye. This theme is important. Right? World Sustainable Development Summit 2022 theme, towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future. Now here, our Prime Minister was there along with our Environment Minister,
right? So all of them were there and they participated in this summit. Here there were discussions with respect to the Paris Agreement, and the summit's main aim was to provide long-term solutions for the benefit of the people across the globe, right? सबके लिए environment के बारे में बात करी गई, energy and resources के बारे में बात की गई यहाँ पे. इसमें कुछ award ये देखिए जी आप, Sustainable Development Leadership Award in 2005. It was established. First awardee was, you can see here, S. Toida. और यहाँ पे देखिए आप, TERI, the Energy and Resources Institute. ये क्या है, इसके बारे में जरा सा देख लीजिए. Is a research institute in New Delhi that specializes in the fields of energy, environment and sustainable development, right? Formerly it was known as Tata Energy Research Institute, और यहाँ पे आप देख सकते हैं renamed in the year 2003. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा. Now next, ISRO's PSLV C-52 mission. The ISRO, the Space Agency of India, successfully launched the Polar Satellite launch vehicle from the first launch pad at Sriharikota Satish Dhawan Space Center. Do write this down. Yes, it is important. Now, about this mission, you can see here, we basically injected 3 satellites into space, orbit में भेज दिया उनको. It has placed an ये देख सकते हो EOS-04 radar imaging satellite weighing 1710 kgs in satellite. With help of this, it will basically help us to have you can say better images of the places where we want to have access, where we want to basically look. Spy तो नहीं बोलना चाहिए, पर जहाँ पे भी हम basically wherever we want to have our eyes on, right? So for better viewing, better clarity, ये हमने यहाँ पे launch करी है. अब ये ऑब्वियसली ये तो नहीं बोल के कर सकते ना कि हम तो स्पाई करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ठीक है, या फिर हम देखना चाहते हैं सब जगह आपस में क्या कर रहे हैं, या फिर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं. तो हमने क्या बोला जी, यहाँ पे वेदर कंडीशंस को ठीक करने के लिए या देखने के लिए हम ये ऊपर भेज रहे हैं. ठीक है, यही होता है, सब जने यही करते हैं. अब देखिए क्या बोला, अंडर ऑल वेदर कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर. देखिए आप, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, इस सब के लिए हम वहां पे भेज रहे हैं. ठीक है, this satellite will be postponed into a, you can see here, or rather positioned into a sun synchronous polar orbit gradually, right? As a co-passenger और भी satellite भेजी गई यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है जी, चलिए. Now अब इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप थोड़ा सा, about the polar satellite launch vehicle, about the 2 other satellites as well. Take a screenshot here. PSLV is the 3rd generation launch vehicle of India. About the people who have launched this ISRO, if we talk about the chairman, the new chairman is S. Somnath, founded in the year 1969, headquartered at Bengaluru, Karnataka. चलिए, next guys is the Economic Intelligence Unit's Democracy Index rankings. 2021 rankings are out now, and different democracies across the globe have been given marks, or you can say points, on the basis of 60 indicators, right? 60 indicators are there based on the performance of all the countries in these 60 indicators. The rankings have been given. 5 categories there are, you can see, measuring pluralism, civil liberties, political culture. Meanwhile, जल्दी से बताइए इंडिया की रैंक क्या है डेमोक्रेसी इंडेक्स में. What is India's rank? जल्दी से बताइएगा. तब तक ये देख सकते हो आप, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल कल्चर कितना ज्यादा है, और उस हिसाब से फिर अलग अलग 4 डेमोक्रेसीज का नाम, जो क्या कैटेगरी कह सकते हो आप, उसमें बांटा गया है. फुल डेमोक्रेसीज, फ्लॉड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजीम्स एंड ऑथोरिटेरियन रिजीम्स. ठीक है, तो ये बेसिकली अब देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी, इंडिया की रैंक 46 एसके ने सबसे पहले बताया. क्या बात है, वेल डन बडी, वेल डन, गुड जॉब, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब काफी लोग और भी आ गए हमारे मित्र सही जवाब देने वाले. सत्या, मोविज, Ipshita, well done. Violet, Kanak, Sneha, Prerna, well done. 46 is absolutely the correct answer. Good job. So India has ranked at 46th. The first position basically is
ऑफ नॉर्वे, राइट। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूजुअली टॉप करती हैं ऐसी रैंकिंग्स को। न्यूजीलैंड सेकंड पे है, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है, और 46 पे इंडिया है। अफगानिस्तान जो है आप देख सकते हो एट द बॉटम। चलिए, अफगानिस्तान एज वेल एज म्यांमार, राइट, बॉटम स्पॉट। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूएई's कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आपको पता है जी, इंडिया इस तरह के अग्रीमेंट्स कर रही है काफी अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो इकोनॉमिक अग्रीमेंट करने से फायदा क्या है? कि दोनों कंट्रीज को फायदा होगा बेसिकली। तो अभी आपको पता है, आप मुझे बताइए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाइन वॉज एक्चुअली इन न्यूज, वाई? जल्दी से मुझे बताइएगा। जो ये सबमिट हुई थी, ये फरवरी की हुई थी, अभी मई में कोई रिसेंट न्यूज है? क्या है वो न्यूज? जल्दी से बताइएगा, कुछ रिसेंट न्यूज है जी इस बारे में? डू शेयर, लेट्स सी कौन इसको बताता है मुझे। जब तक मीनवाइल तो आप देख सकते हो द CEPA, जो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये जो था, ये 18 फरवरी को लिखा गया, अग्री करा गया। इंडिया यूएई ने इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है, अब इसमें काफी सारी चीजें इसमें बोली है, देख सकते हो आप। यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर्स हम एक दूसरे के बनेंगे, और यहाँ पे इन द नेक्स्ट 5 years यू कैन सी bilateral trade is expected to grow by $100 billion in goods and $15 billion in services। यहां तक कि इंडिया ने, पहले क्या होता था, यूएई जो है तो कुछ सीधे कुछ उल्टे तरीकों से इंडिया से लेबर लेके जाता था, क्योंकि चीप लेबर था, और वहां जाके उनसे बुर्ज खलीफा और ये बुर्ज अल अरब सब कुछ बनवाता था। अब इंडिया ने बोला कि यार तुम ऐसे मत करो, तुम हमसे बोलो तो हम भी इन्वॉल्व हो जाए, हम उनको भेजेंगे वहां पे अच्छी तरह से, और उनका ख्याल भी आप रख सकते हो, हम भी ख्याल रख सकेंगे, और फिर ऑब्वियसली है ना थोड़ी शाबाशी भी मिल जाएगी। सारी चीजें एक साथ होती है भाई, सही बात है। तो अब यहाँ पे इंडिया ने भी इस तरह से अग्री कर लिया है कि हम हमारे हमारे एम्प्लॉइज को हम पहले यहाँ पे स्किल उनको प्रोवाइड कराएंगे, और फिर हम उनको इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत वी विल सेंड देम टू यूएई, वेयर दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सच प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम्स है वहां पे उस पर वर्क करेंगे, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड, यस ही पास्ड अवे। ये सभी ने सही जवाब दिया है यहाँ पे, बहुत खूब बहुत खूब। वेल डन वायलेट, वेल डन कनक, ध्रुव, एवरीवन, गुड जॉब आभाष, यस वेल डन। अबे एक्सपायरेशन क्या होता है भाई? ही डाइड, ही पास्ड अवे, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए मिलन 2022। मिलन 2022 क्या है जी? इट्स बेसिकली अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी। आप देख सकते हैं ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुई। सबसे पहले लिखिएगा, इट वाज कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम, ठीक है जी, विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई। अब मिलन 2022, ठीक है, इन विशाखापट्टनम, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, द पार्टिसिपेशन फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडेड 13 शिप्स, 39 डेलीगेशंस एंड 1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एज वेल। हु वाज द चीफ गेस्ट? यू कैन सी हियर द चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, he was the chief guest here, right? When we talk about the theme of this exercise, you can see the theme was camaraderie, cohesion and collaboration, the 3 C's, ठीक है, the 3 C's is the theme। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 39 countries participated including Indian Navy। इंडियन नेवी को मिला के 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। दिस मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड इन द ईयर 1995, राइट। अभी आप देख सकते हो 2 बार नहीं हुआ, 2001 और 2016 में, बट दैट इज ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एज इट you can see at its onset, the Milan exercise witnessed the participation of only 4 countries initially, जब था तो कम थी, अब देख सकते हो आप 39 countries participate in this। चलिए नेक्स्ट, द कैबिनेट क्लियर्स सेटिंग अप ऑफ G20 सेक्रेटेरिएट। आपको पता है पहले इसका कोई सेक्रेटेरिएट था नहीं, अब अप्रूव किया है कि भाई सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा। खैर यहाँ देख सकते हो G20 की अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी की, तो मुझे बताइए जो इनका अगर G20 की बात करें तो G20 के जो आउटगोइंग, जो करंट एंड द फॉर्मर जो यस
द अपकमिंग, द करंट एंड द फॉर्मर जो G20 प्रेसिडेंट है, वो कौन कौन है ये एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। राइट, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। करंट कौन है, फॉर्मर कौन है और अपकमिंग कौन है। राइट, ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। दे बेसिकली फॉर्म द G20 ट्रॉइका। जिस G20 ट्रॉइका इज क्रिएटेड, क्यों बनाया गया, ये G20 रिलेटेड चीजें हैं। तो जब भी इस तरह से कोई भी पैसेज पढ़ो, कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो, तो जो भी आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, वॉट एवर थिंग्स यू हैव studied about the topic earlier, make sure you do revise it once you are studying about a particular topic. Right, so here we go. G20 troika, basically to make sure that the goals of the upcoming presidencies, the former and the current one, they are all in sync, they are on there are no major you can say divergence, और इधर उधर चीजें नहीं जा रही हो, गोल काफी क्लियर हो, समझ में आया कि भाई जो पहले वाले करना चाह रहे थे वही आगे वाले कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि रैंडमनेस चल रही है। राइट, चलिए, ऑलराइट, Italy, Indonesia, India, well done, good job Kanak, Abash, Devarita, Hemant, SK, Moves, Dhruv, Ipshita, very good, Taha, Sneha, Nikita, well done to all of you. Chaliye ji, shabash, good job everyone. All right, now here we go. We can see the Secretariat will be guided by an apex committee, which will be headed by Prime Minister Narendra Modi, with Finance Minister Nirmala Sitharaman, Amit Shah, and S. Jaishankar as well. The G20 Sherpa is Piyush Goyal. Please write this as well. India in December last year has joined the G20 Troika, which consists of obviously Indonesia, Italy, and India, as you all have shared this, right? The current, the previous, and the incoming presidents, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं the G20 theme for the year 2022. You can see recover together, recover stronger. Recover together, recover stronger. This is the theme of G20 Leaders Summit for the year 2022. Right? अगली बार जो होगी G20 Summit, तो India will be the host. All right. The G20, for the first time, India will hold the presidency from December 1st, 2022 to November 30, 2023. पहली बार India presidency ले रहा है G20 की. Very important this is. Definitely expect this in the exam. All right. Next one, Aravali Biodiversity Park in Gurugram has been designated as India's first OECM site. OECM again is a subset of the wetlands. देख सकते हो आप, इंडिया का पहला OECM. OECM stands for Other Effective Area Based Conservation Measures Site. On the World Wetlands Day, this was basically launched. तो यहाँ पे OECM का जो टैग है ये कौन देता है? Is been given by International Union for Conservation of Nature, right? To those areas who are currently not protected, but वहां पे biodiversity बहुत अच्छी है और उसको protection की जरूरत है. तो Aravali Biodiversity Park in Gurugram has been given this OECM site title. ठीक है, चलिए अब ये IUCN के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इट इज अ मेंबरशिप यूनियन which basically has both government as well as lots of other civil society organizations, right? Created in the year 1948. IUCN Red List of Threatened Species. You can see it is world's most comprehensive inventory of global conservation status of both plant as well as animal species. तो खत्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उस सब के लिए काम यहाँ पे किया जाता है, राइट? जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज है उनकी प्रोटेक्शन की जाती है. चलिए, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स. डिफेंस मिनिस्ट्री has started the home delivery of medicines under the services e-health assistance and teleconsultation known as Sehat. Please write this down. Again, holds very importance because it is health related in news, जो कि हमारे लिए हमेशा important रहती है. Alright, second, a global center for excellence in affordable and clean energy has been launched at which IIT? Now this question can be asked. IIT Dharwad, Karnataka. ठीक है जी. Prime Minister Narendra Modi dedicated the Statue of Equality. आप देख लीजिए, Statue of Equality बनाया गया भक्ति सेठ श्री रामानुजाचार्य
की रिमेम्बरेंस में, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यू कैन सी हियर, this statue basically was made using panchloha. Panchloha basically 5 metals. What were the 5 metals? Quickly share in the comments. जल्दी से बताइएगा कौन से वो 5 metals थे. 1 2 3 4 5. Gold and silver were among them. बाकी 3 बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है. और ये कहाँ पे था, ये पूछ सकते हैं आपसे. Venue, तो the answer is Hyderabad, of course. Hyderabad is the answer for that. All right, next, legendary singer Lata Mangeshkar ji passed away. We all know this. 92 years she was. She passed away. Bharat Ratna recipient, passed away in Mumbai. All right, 5 metals. I am getting no answers at the moment. 5 तत्व बोले हैं आपने, नवनीत बिल्कुल सही. कौन से थे वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है. We have basically discussed this. Copper, silver, gold, zinc, what else? Chaliye. Guys, this has been discussed previously in classes as well. We have discussed in YouTube sessions as well. ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. तो ये आपका task है. You have to find out all the 5 metals and in the comment of this video you have to share the same, right? Comments में आपको ये share करना है कि भाई कितने metals थे. चलिए, और कौन कौन से metal हैं. Next, Union Health Minister Mansukh Mandavya has basically launched the Mission Indradhanush 4.0. Mission Indradhanush 4.0 has been launched. Next, Railway Protection Force has launched a nationwide operation titled Operation Rahat, Operation Ahat, to curb down human trafficking. So for those who are not aware, let me quickly share this, that we all know that in railways, right, there are lots of long distance trains. So to make sure that people who are trafficking the women, children, girls, boys, whomsoever, they basically use railways, right? So whenever or wherever there are long distance trains, Railway Protection Force will continuously keep on moving, or rather inspecting everyone in the trains, and if they find any suspicious activity or any suspicion on anyone, they'll basically make sure that they help people out, right? So basically this is an effort where RPF will actively, Railways dedicated police force will actively, search and make sure they are vigilant, right? They are actively looking out for people who are carrying out human trafficking. So this is basically a very good initiative started by the Railway Protection Force. Meanwhile, also I'd like to share here, RPF, the Railway Protection Force, has also started another nationwide operation where they are hunting down, or rather they are aiming to close down the operations of all the brokers, all the middlemen who are responsible for creating you can say a dearth of opportunities for common people to get access to easy tickets, right? So basically the middleman, they basically book all the tickets and they use their infrastructure, whatever the infrastructure they have, right? They use it in a way that they always have tickets with them, and the common man basically is left ticketless. So to make sure that that does not happen, they started an operation. What is the name of that? This is your homework. You have to find out and answer in the comments of this video, right? Whomsoever gives the correct answers, I'll definitely congratulate them in the comment itself. Chaliye. Next, India has signed an agreement with the UNWFP, the World Food Programme, for distribution of 50,000 metric tons of wheat that it has committed to sending to Afghanistan as a part of humanitarian assistance. अब देखिए आप, अफगानिस्तान में हम लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, वायलेट होमवर्क है जी, आपको बताना है, कमेंट्स में बताना है, बिल्कुल ठीक है. मिशन इंद्रधनुष शिव, मिशन इंद्रधनुष बेसिकली इज, यहाँ पे किसी ने पूछा मिशन इंद्रधनुष क्या है. मिशन इंद्रधनुष इज टू वैक्सीनेट पीपल जो कि कोविड की वजह से, कोई भी विमेन या बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लग सकी, उनको वैक्सीन लग जाए. दैट इज व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष. ठीक है, चलिए जी.
डन है। चलिए क्वेश्चंस भी है आज डेफिनेटली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, 35th अफ्रीकन यूनियन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट इथियोपिया, या वेन्यू लिख सकते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऑन 24 February signed an agreement to collaborate on sustainable cities इंडिया प्रोग्राम। पूछ सकते हैं आपसे, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव बेसिकली कोऑर्डिनेटेड फॉर दिस, तो पता होना चाहिए हमें, तो ये देख सकते हैं आप, NIUA एंड द WEF। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ द कंट्री विल बी बिल्ट इन लम्हेता, ये है जी जबलपुर मध्य प्रदेश में, पहला जियोलॉजिकल पार्क ऑफ द कंट्री। इससे याद आ रहा है मुझे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हेड बताइए जल्दी से, कौन है जी हेड, हु इज द हेड? अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है, आप सभी को पता भी है, जल्दी से चैट में बताइएगा। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पराय शिक्षा, ये देख सकते हो आप, शिक्षालय एंड ओपन एयर क्लासरूम इन द नेबरहुड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 7। ये पूछ सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट ने किया, तो वेस्ट बंगाल, या कौन से स्टेट में हुआ, तो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, GSI के हेड कौन है, देखते हैं जी फटाफट से, क्या है जी आंसर्स? वेरी गुड, माही शर्मा इज द करेक्ट, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर। वायलेट, वेल डन। डॉक्टर S राजू इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। अपर्णा, नवनीत, कनक, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। चलिए जी, all right, Avash, well done. The Tamil Nadu government has strongly objected to Kerala's announcement to construct a new reservoir of the existing Mullaperiyar Dam. अब ये पानी की शेयरिंग को लेकर बहुत इश्यूज आते रहते हैं, आपको पता है जी, कर्नाटका तमिलनाडु में इशू था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो केरला ने अनाउंसमेंट किया है जी मुल्लापेरियार डैम पे कंस्ट्रक्शन करने का, जिसपे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है। The government of India, state governments of Karnataka and Odisha, along with World Bank, have signed loan agreements of $115 million for the implementation of, you can see here, rejuvenating watersheds for agricultural resilience through innovative development। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा है, पानी को पहुंचाना हर एग्रीकल्चरल जगह पे या हर एग्रीकल्चरल लैंड पे, दैट इज व्हाट द मेजर एम इज, और उसको यहाँ पे एब्रिविएशन दिया हुआ है रिवॉर्ड, which stands for rejuvenating watersheds for agricultural resilience through innovative development। तो ये आप याद रखिएगा, the rewards project, important one, right? पूछ सकते हैं आपसे, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नॉर्वे was the most successful nation both in terms of gold medals and the total medals at the Beijing Winter Olympics. The Indian athlete that participated here was Arif Khan, the only Indian athlete that basically participated. इंडियन, अगर आप देखेंगे यहाँ इंडिया ने क्या किया है, यहाँ से इस बीजिंग ओलंपिक्स से बेसिकली हमने इसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था, नॉट जस्ट इंडिया बट मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। Next, Mumbai has been officially elected as the host of 2023 International Olympic Committee session। अब आप देखिए मुंबई को होस्ट बनाया गया है IOC के सेशन का, 140th सेशन का, ठीक है। It will be held at the Geo World Convention Center in Mumbai। चलिए अब टाइम है दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स का। मेक श्योर यू कीप अ टैब ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव बेसिकली अटेम्प्टेड। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, कितने आपके आंसर आए, ये आपको मुझे बताना है। आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस यू आर सपोज्ड टू शेयर योर स्कोर्स। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। चलिए जी, लेट्स सी, लेट्स गो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे डैम है जो आउटडेटेड है और हमारे आज के इंजीनियर्स बोलते भी हैं कि वो खतरे पे हैं, उनको हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा, उनके अंदर बहुत सारे कुछ फ्लॉज भी हैं और कुछ जो है जो आउटडेटेड भी हो चुके हैं। बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड डैम भी है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल। चलिए जी, द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन, यस इट इज एसोसिएटेड विद स्कीइंग। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। लाइन से सब लोग कह रहे हैं जी, सी सारे लोग कह रहे हैं। द फाइनेंशियल आउटले द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज approved in the continuation of a mega police modernization scheme is ये the correct answer, 26,275 crore rupees। एक जना गलत आंसर देता है तो हमें लगता है यार वो दे रहा है तो सही दे रहा होगा, हाँ तो वो मार्क कर देते हैं हम, ये सही चीज नहीं है। तो वेल डन टू
माही ने बिल्कुल सही जवाब दिया. वेल डन बडी, गुड जॉब. D is absolutely the correct answer. Next one, second, the coming sector is located in which state or union territory where 7 army personnel died in an avalanche. अब ये क्वेश्चन है जी, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने. क्या है जी सही आंसर इसका? So the second question, the correct answer, avalanche आया है यहाँ पे, तो the correct answer is D. This is the अरुणाचल प्रदेश region, coming sector में वहां पे ये हुआ हादसा. ठीक है, चलिए देखते हैं जी सही जवाब किस किसने दिया सेकंड क्वेश्चन का. सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर नवनीत. हाँ भाई बिल्कुल सही, डी बोला था आपने. चलिए वेल डन. सेकंड क्वेश्चन, भावना वेल डन. देवारिता, आप लोगों ने जी सही जवाब दिया, वेल डन. द करेक्ट आंसर वाज Arunachal Pradesh. Let's go. Third question, which country is the host of One Ocean Summit 2022? The correct answer for the second question, or rather the third question, is C, right? So the answer is France. France in cooperation with UN and World Bank. So France is the correct answer for the third question. बहुत लोगों ने सही जवाब दिया इसका, तो शिव ने भी दिया, मोवेज, इप्शिता ने, मोवेज ने ए बोला है, आभाष वेल डन, अस्मिता गुड जॉब, स्नेहा वेल डन, कनक चलिए जी वेल डन, नवनीत यस, माही ने भी, निकिता ने भी, श्रेया वेल डन ऑल ऑफ यू. चलिए जी बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. ये आज ही हमने किया है. इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद UNWFP. किस कंट्री की मदद कर रहे हैं ये? तो ये कर रहे हैं मदद अफगानिस्तान की. बिल्कुल सही. ये तो आई एम श्योर एवरीवन विल गेट दिस करेक्ट बिकॉज वी डिड दिस टुडे ओनली. तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड पिंकी, शिव, ग्लोरी, अस्मिता, अंश, दिवारिता वेल डन, एसके यस, किंजा, माही, नवनीत, मोविज यस, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ऑपरेशन परिवर्तन हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच स्टेट टू एलिमिनेट कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस? बताइए जी. ऑपरेशन परिवर्तन हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच स्टेट टू एलिमिनेट the cultivation of cannabis? The correct answer here is D. Very good Bhavna, very good Navneet, very good, well done Bhavna, Kanak, good job guys, absolutely correct. D is the right answer. Before you answer the sixth question guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने चैनल ये जो वीडियो देख रहे हो इसको आपने लाइक नहीं किया है, ये बहुत बड़ी गलती है भाई. फटाफट से इमीडिएटली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, Paul Henry Santiago Demiba is the president of B, that is you can see here Burkina Faso, right? Burkina Faso is the correct answer. आधे से ज्यादा लोगों ने पहली बार ये कंट्री का नाम सुना होगा, तो अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया आपका, ज्यादा चिंता मत कीजिएगा. बट फिर भी मैं देख रहा हूँ आशी का सही जवाब आया, देवारिता का भी, भावना का भी, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया. वेल डन, गुड जॉब. चलिए जी सेवेंथ, इसरो ने लॉन्च किया ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. ये कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी हमारी? सो द आंसर इज, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दिस, इट वाज द fourth one, right? So EOS 4, Earth Observation Satellite 4 is the correct answer. Who was declared as the Business Standard Banker of the Year 2020-2021? Award जो है पुराना है बट अभी रिलीज किया गया, मतलब ईयर जो है 2020-21 है, बट was announced recently. The correct answer here was संदीप बख्शी. अब ये MD एंड CEO हैं जी ICICI बैंक के, इनको बिजनेस स्टैंडर्ड के बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. चलिए जी, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन, सही जवाब आप लोगों का. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2-day ग्लोबल समिट ऑन रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच सिटी? पहला 2 दिन का ये ग्लोबल समिट था ऑन रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच सिटी? द आंसर इज डी, इट इज हैदराबाद. ग्लोबल 2-day समिट रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया हेल्ड इन हैदराबाद. चलिए, सो वेरी गुड. हैदराबाद हैज बीन इन न्यूज, आप सबको पता है. वेरी गुड नीरजा, वायलेट, कनक, स्नेहा,
Navneet, Debarita, Mahi, good job. Glory, Satya, शाबाश. Navneet, Kinza. चलिए जी. Alright, 10th question. Which country will hold the presidency of G20? अगर एक भी बच्चे ने ये गलत जवाब दे दिया तो बहुत दुख होगा भाई, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी है, हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है अब तो. चलिए, the correct answer to this one is the 10th question. The correct answer is, of course, India. Right? C is the right answer. G20 presidency will belong to India from the 1st December 2022. Right? उसको लेकर 30th November 2023 तक India will be there. All right. To the next one, the theme of Energy and Resource Institute's World Sustainable Development Summit 2022. बताइए जी क्या था? आज ही हमने ये किया है डिस्कस. थीम क्या थी ये बताइए, देखते हैं अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है या नहीं. हाँ, सी तो सबने लाइन से सबने सही बताया. वेरी गुड पिंकी, श्रेया, मयूर, अस्मिता, किंजा. चलिए, here the correct answer is A. Oh, well done, बहुत बढ़िया. आबाश, Violet, Ashi, SK, good job, well done everyone. Shabash. 12th question, which organization has organized a hackathon named Darkathon from February to April to find solutions to the darknet markets? आपको पता है डार्क वेब जो है वहां पे कई सारी इलीगल ट्रेड्स होती हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हैकाथन किया जहां से एथिकल हैकर्स हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको फिर जो है यूज भी कर सकें. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ड्रग्स वगैरह यूज होते हैं इस तरह के डार्कनेट पे, है ना, तो ट्रेड वगैरह करना ये सब चीजें होती हैं. ऑलराइट, 12th क्वेश्चन, यस, बी इज द राइट आंसर. सो वेल डन एवरीवन. चलिए, 13th क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट करी अभी रिसेंटली कौन सी सिटी में? सो द आंसर टू दिस वन, we have actually discussed this in a previous mock as well. The correct answer is C. It is Mumbai. वाटर टैक्सी सर्विस शुरू कर दी गई है जी मुंबई में. चलिए, वेरी गुड माही, बिल्कुल सही कहा आपने, एस प्रधान. Next, 14th, Asia's largest defense exhibition, Def Expo, will be held in Dash. कहाँ पे हुआ ये दोस्तों? So this was organized in Gandhinagar in the month of March. गांधीनगर में हुआ ये, organized in the month of March. चलिए जी, 15th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Which state government has announced a new biotechnology policy for the year 2022 to 2027 aimed at achieving the vision of our Prime Minister that was there mentioned in the Atmanirbhar Bharat. बताइए भाई कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है जी न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी? सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन is, yes, it is D, गुजरात. गुजरात ने ये गुजरात ने बेसिकली ये अनाउंस किया है. So well done everyone who got this one right. Very good. Shreya, Glory, Ashmita, well done. चलिए, all right guys, 15 questions we have done. बढ़ते हैं जी next question की तरफ. I hope all of you are noting down the number of questions you have got correct. जितने भी correct answers हैं वो आप note कर रहे हो, ये उम्मीद कर रहा हूँ. COP South 2022 is a joint tactical airlift exercise between two air forces. कौन कौन सी वो दो एयर फोर्स हैं? जल्दी से बताइए. What is the answer here? The correct answer. Well done. Yes, Navneet, well done. Good job. Kinza, yes, the correct answer is B. It is the Air Force of US along with Bangladesh, right? US, Bangladesh, COP South 2022. Now, this again has been discussed in our classes here at BYJU'S Exam Prep. I'm sure people who attended the same are giving correct answers. Who has been appointed as India's first National Maritime Security Coordinator? क्योंकि ये word आया है first, this becomes important. Because of the word first, this becomes important. The correct answer to this one is B. That is G. Ashok Kumar. So do write this. G. Ashok Kumar is the first maritime security coordinator. Do remember this. NMSC, the first, G. Ashok Kumar. All right. Next, 18th, which country will use India's UPI system? Again, has been discussed numerous times. A pretty easy one. The correct answer is
Nepal, right? Nepal is the correct answer. We'll be using our UPI system. Next one, 19th question. According to annual frontiers report released by UN Environment Program, which was the most affected region due to wildfires? कौन सा सबसे ज्यादा affected region था due to wildfires? The correct answer to this is C, right? C is the correct answer. That is अफ्रीका. वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन जो रहा दोस्तों वो रहा जी अफ्रीका. सो सी इज द राइट आंसर फॉर द 19th क्वेश्चन. वेरी गुड वायलेट, आवाश, पिंकी, भावना, गुड जॉब एवरीवन. किंजा, Ashmita, well done. Yes. All right, 20th question. The 12th edition of President's Fleet Review was conducted at which place as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav? What is the answer to this? चलिए बताइए. Let's see. सी कह रहे हैं कुछ लोग. चलिए भाई, बिल्कुल. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई. और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो भाई तुरंत से लाइक का बटन भी दबाना जरूरी. ऑलराइट, 20th क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी, राइट? दैट इज विशाखापट्टनम. सो वेल done everyone who got this one right. Glory, Violet, Navneet, Ashi, Sneha, Kinza, Mayur, Bhavna, Satya, well done everyone. Mahi, good job. Yes, it is Visakhapatnam movie. Nahi, Nikita, well done. Yes. Chali. Alright, 21st question. Director of the Institute of Economic Growth. Kaun hai ji? Who has been appointed as the Director of the Institute of Economic Growth? The correct answer here is A. Professor Chetan Ghate. Right, तो आप यहाँ देख सकते हो A is the right answer here. 22nd question. Which airport continues to be world's busiest airport by international passenger number of? ये देख सकते हैं आप. Busiest का मतलब क्या है? More people travel over there, right? So देख सकते हैं busiest airport by international passenger numbers for the 8th consecutive year is the Dubai International Airport, right? Busiest airport है भाई दुबई का. 23rd, best female actor award in the दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको मिला? बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड. अगर आप लोग ये आंसर दे दोगे तो मतलब आप इग्नाइट मैगजीन भी लगातार पढ़ रहे हैं. काफी सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएगी. चलिए जी, वेरी गुड. काफी सारे अच्छा मिक्स आंसर आने लगे. ज्यादातर लोगों ने भी बोल दिया है कृति सैनन एंड दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. वेल डन किंजा, नवनीत, अस्मिता, मयूर, निकिता, ग्लोरी, गुड जॉब भाई जिसने भी आप में से बी बोला. ऑलराइट, लेट्स गो. नेक्स्ट वन, हियर वी गो. 24th, Indian Air Force has conducted 6th Eastern Bridge 6 exercise, which was with which country? किस country के साथ मिलकर 6th edition of the Eastern Bridge 6 exercise was conducted? The answer, it is B, the Royal Air Force of Oman along with the Indian Air Force. Exercise name Eastern Bridge. ठीक है, Eastern Bridge 6th edition. Next, India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory was launched in which place? Is it Nashik, Hyderabad, Surat or Jaipur? What is the answer? चलिए जी, वेरी गुड. सब के सब कह रहे हैं जी नाशिक, हैदराबाद, नाशिक दैट इज महाराष्ट्र. वेल डन, बहुत खूब. चलिए जी. ऑलराइट, 25th question. A is the correct answer. Let's move on to 26th one. The government has approved the scheme of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. राइट, तो देख सकते हो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान for continuation till the year dash, that is till the year 2026. 2026 is the correct answer. 2026, right? तो देख सकते हो 2026 तक ये चलता रहेगा. All right. Next, which state government has launched India's first night navigation mobile application for ferry services? Ferry services के लिए obviously जहाँ पे ferries चलती होंगी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा पानी से related जगह होंगी ज्यादातर. D is the right answer. That is Assam. तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ferry services जो चलती है उनके लिए ये ऐप बनाया जाएगा. तो ferry basically is basically a vessel that helps you transport from one point to the other using water, right? चलिए.
Next, who has been conferred with the Hilal-e-Pakistan, the second highest civilian honor in the country? अभी किसको मिला ये the second highest civilian honor by Pakistan? The correct answer for this one is A. Yeah, this is the Microsoft founder and philanthropist Bill Gates, right? The one of the richest man on the planet before he basically donated most of his wealth. चलिए जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और फिलेंथ्रोपिस्ट, जो देख सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला इनको पाकिस्तान से. विच फाइटर एयरक्राफ्ट शोकेस्ड बाय इंडिया एट द सिंगापुर एयर शो? ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है. अब बताइए इसमें क्या है जी सही जवाब? The correct answer here was the indigenous, हमारा खुद का तेजस मार्क 1, राइट? हमने खुद का अपना जो है हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड, देख सकते हैं आप, हमारा जो एयरक्राफ्ट था, फाइटर एयरक्राफ्ट था तेजस, उसको हमने दुनिया के सामने दिखाया. नेक्स्ट, 550 ton capacity Govardhan bio CNG plant was inaugurated recently by our prime minister. गोबर से धन निकालना, गोबर से basically the cow dung is used to create, you can see here, CNG and gases which are usable. तो बताइए देखो क्या है जी सही आंसर, कहां पे किया ये? So the answer is B, that is Indore, right? Indore is the correct answer for this one. Now, before I wind this session up, if you are preparing for the year 2022, make sure you're following this series, and you can also follow us on our Instagram handle, BYJU'S exam prep. आप वहां पे लिखेंगे, आपको वहां पे हम मिल जाएंगे. आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब आप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर 2023, आवर बैचेस आर करेंटली रनिंग, तो आप जल्दी से इस नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं इन केस यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर बैचेस. नाउ व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 30? How much did you score? Please share the same with me. 30 में से क्या रहा जी आपका फाइनल स्कोर? Let's see. 27, 26, 25. क्या बात है? आवाश का 25, श्रेया, निकिता well done. 28, अश्मिता 25, 23 स्नेहा, क्या बात है जी, well done. देवरिता 27, नवनीत also well done. Violet 26, good job, good job, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, ऑल राइट, 25 आशी, क्या बात है. चलिए, तो बहुत बढ़िया. आपके जो भी स्कोर्स हैं वो जरूर आप कमेंट्स में भी शेयर कीजिएगा. अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना स्कोर शेयर नहीं कर पाए तो आप वहां पे कीजिएगा ताकि मैं देख लूं. और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, सो इवन देन यू आर सपोज टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सो दैट आई कैन सी द सेम. चलिए, ऑलराइट, सो गाइस, विद दिस आई विल रैप अप दिस सेशन. थैंक यू सो मच. वील मीट रियल सून. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा. मिलते हैं बहुत जल्द. ध्यान रखिएगा अपना. बाय बाय. थैंक यू.